progress. चैट बॉक्स डिसेबल्ड है बिकॉज चैट बॉक्स में आप लोग आंसर देते हो। जिनको आता है वो तो देते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी सोचते हैं कि हम भी दे ही दें। आंसर बताने के बाद आंसर आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने चैट बॉक्स से डिसेबल कर दिया कि आप लोग फोकस रहो कि क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, what is the process of converting a liquid into its vapor state below its boiling point called? बॉइलिंग पॉइंट से पहले, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? द आंसर इज इवेपोरेशन। ठीक है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जा रहा है तब देन इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पे इवेपोरेशन होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वेपराइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, which biological process involves the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts, leaves of the plant? Transpiration. The process is called transpiration. Next, what type of spherical mirror has its reflecting surface curved to outwards? कौन सा स्फेरिकल मिरर होता है जो आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है? द आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड होता है, और कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। ठीक है, पता है? सो गुड। नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, which acid is naturally present in our stomach to help kill bacteria and digest food? Yes, very good. HCl, hydrochloric acid. Good, Ashley. That is hydrochloric acid, HCl. Next, what do we call the symbiotic relationship between an alga and a fungus? Alga and fungus के बीच में symbiotic relation होता है, उसको क्या कहते हैं? lichen. ठीक है, that is lichen. Next, which component of blood is primarily responsible for the clotting of blood at the wound site? जहां पे चोट लगती है वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है? किस कंपोनेंट से? द आंसर इज प्लेटलेट्स। ठीक है, द आंसर इज प्लेटलेट्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर नहीं, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, which instrument is used to measure the electrical current flowing through a circuit? एमीटर। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए यू क्या यूज होता है? एमीटर। करंट किस, ये यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन बेकिंग सोडा यूज्ड इन किचन्स? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? नहीं पता है तो नोट कर लो फट। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, वापस आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, which primary structural protein makes up human hairs and fingernails? The primary structural protein जिसकी वजह से हमारे नाखून और बाल बनते हैं, केराटिन।
पता ही नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता कि अच्छा प्रोटीन यूज होता है इसमें। नेक्स्ट, what is the deep central layer of the earth that lies directly beneath the middle, beneath the mantle cord? कोर। ठीक है, कोर। इसमें दो कोर को दो पार्ट में, इनर कोर और आउटर कोर को में डिवाइड किया गया है, लेकिन कहा उसको कोर ही जाता है ना। Which type of rock is formed when molten magma cools and solidifies deep inside or on the surface of the earth? molten magma जब ठंडा होता है और सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उस रॉक को क्या कहते हैं? इग्नेस रॉक। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड द इग्नेस रॉक। What term is used to describe the angular distance of a place north or south of the Earth's equator? Latitude. That is latitude. That is the angular distance. Which is the longest river flowing entirely within the continent of Europe? The Volga River. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। Which is the longest river flowing entirely within the continent of Europe? यूरोप में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी नाइल नदी है, नील नदी है, लेकिन इन द यूरोप दैट इज वोल्गा रिवर। अब ये पूछे कि इन द इंडिया, तो तुम मत लिख के आ जाना नील रिवर, दैट इज वोल्गा रिवर। यहाँ पर इंडिया के लिए गंगा है, वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट नील रिवर है, लार्जेस्ट अमेजन रिवर। Now, what narrow strip of water connects the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea? मेडिटेरियन सी में से कनेक्ट करने वाली अटलांटिक ओशन को जो स्ट्रिप है, उसको क्या कहते हैं? द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इसका नाम रखते हो गया, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। दिस इज कनेक्ट द अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट, which type of forest ecosystem is famously known as the taiga? Boreal or coniferous forest? What instrument is used by the meteorologist to measure the total amount of rainfall over a specific period? न्यूज में आता ना कि 7 मिलीमीटर बारिश हुई है, 9 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं? रेन गॉज। दैट इज रेन गॉज, याद रखना। Which is the largest country in South America by land area? साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है बाय लैंड एरिया? ब्राजील। ब्राजील इज द largest country in South America. What do we call a high flat land form that rises sharply above the surrounding area on at least one side? Plateau। प्लेटो की डेफिनेशन ही यही तरह से। Next, which planet in our solar system is known as they have the highest number of moons? Saturn। Saturn has the highest number of moons. Who was the founder of the slave dynasty?
Mamluk dynasty in India. Qutbuddin Aibak. Slave dynasty का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार बनाने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार है। ठीक है। Which famous Chinese traveler visited India during the reign of King हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के राजा हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज ट्रेवलर जिसने इंडिया विजिट किया था? होंगजेंग, योन टीसैन। खतरनाक ही नाम नहीं होता है, याद करने में ही, मतलब याद करते करते भूल जा। नेक्स्ट, what was the original name of the great Mughal emperor Akbar before the ascended the throne? जलालुद्दीन मोहम्मद। इसलिए उन्हें अकबर को जलाल भी कहा जाता है। Which Chola king is celebrated for building the magnificent Brihadiswara temple at the तंजावुर? तंजावुर में जो टेम्पल है वो किसने बिल्ड किया था भाई? राजा राजा चोला वन। राजा राज चोला वन, नोट राजा। अंग्रेजों ने हमारी हिंदी खराब कर दिया, राज का राजा बना दिया। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ द एंशिएंट इंडिया treatise or statecraft and military strategy called अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ही कहते हैं ना शायद, हाँ इकोनॉमिक्स ही कहते हैं। वो उस इकोनॉमिक्स को लिखने वाले कौन थे? चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, यस, चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इन विच ईयर डिड द हिस्टोरिक फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत टेक्स प्लेस? पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ? इन 1526। 1526। Which social reformer founded the Brahmo Samaj in 1828? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज के रिफॉर्मर फाउंडर जो थे वो राजा राम मोहन रॉय थे ना। What ancient trade network connected China and the Far East with Europe and the Mediterranean? The Silk Road. Which famous monument was built by Shah Jahan in Delhi as the seat of Mughal power? The Red Fort, Lal Killa. Which classical dance form is native to the state of Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश का नेटिव क्लासिकल डांस क्या है? कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। Who is considered the first citizen of India? The President of India. ठीक है। What is the maximum strength number of members permitted in a Rajya Sabha? ठीक है। What is the maximum strength number of members permitted in the Rajya Sabha? That is
250 मेंबर्स, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट, which fundamental right in the Indian Constitution ensures that all citizens are treated equally before the law? Right to equality. हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हर एवरी इन इंडिया एवरी सिटीजंस हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से ये का राइट टू इक्वालिटी इज द फंडामेंटल राइट जो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करने का है। नाउ, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। What is the minimum age required to contest election for the Lok Sabha? 25 years. लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होने के लिए 25 इयर्स। हाँ, वोट देने के लिए सिर्फ 18 इयर्स है। ठीक है, वोट देने के लिए 18 इयर्स है, बट लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होने के लिए दैट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड, दैट इज 25 इयर्स। नाउ, which tier of the Panchayati Raj system operates at the district level? पंचायती राज सिस्टम का कौन सा टियर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है? जिला परिषद, दैट इज नोन एज जिला परिषद। नाउ, हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा? आई थिंक द चीफ मिनिस्टर, सॉरी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे भी नहीं पता, मैंने तुक्का मारता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. Which schedule of Indian Constitution contains the list of officially recognized languages? 8th schedule. Who is the administrative head of the state secretariat in India? State secretariat in India का head कौन होता है? The chief secretary. ठीक है, आंसर इज चीफ सेक्रेटरी। What is a bill called after it is passed by both houses of parliament and receive the president assent? यानी जो पार्लियामेंट से ही पास हो गया हो और प्रेसिडेंट ने पास कर दिया हो, तो उस बिल को क्या कहेंगे? एन एक्ट, एन एक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म को coxswain is strictly associated with which sport? So the answer is rowing। देखो यही कॉक्सवेन। अब ये रोइंग गेम होता क्या है मुझे भी नहीं पता, थोड़ा सा डिफर मिला था, मैं उस दिन बात भी करता पिछली क्लास में, रोइंग नाम का कोई गेम है। तो कॉक्सवेन इज स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड विद रोइंग। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड स्प्रिंटर उसेन बोल्ट विन अक्रॉस हिज ओलंपिक करियर? उसेन बोल्ट ने अपने ओलंपिक करियर में कितने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, टोटल 8 गोल्ड मेडल्स in 100 meter, 200 meter, 400 meters. The Ryder Cup is a prestigious trophy awarded in which sport? Golf। गोल्फ में राइडर कप ट्रॉफी यूज होती है। ठीक है, विंबलडन इन टेनिस। Which country is known as the birthplace of the modern game of cricket? जो क्रिकेट है उसका बर्थ प्लेस यानी किस कंट्री से उसकी स्टार्टिंग हुई थी? इंग्लैंड। ठीक है, दैट इज
England. Now, what is the official currency used in Japan? That is Japanese yen. Japanese yen. Who was the first person to step onto the surface of the moon? ये आसान है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है. सेकंड पर्सन कौन था? एडविन एल्ड्रिन. Which international organization is headquartered in Geneva, Switzerland and manages global public health? WHO. एक ही ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO, World Health Organization. What is the full form of the computer acronym RAM? RAM की full form. Random Access Memory. ठीक है. Now, next. Which day is observed worldwide as the International Earth Day every year? Earth Day किस साल मनाया जाता है? सॉरी, किस डे पे मनाया जाता है? अप्रैल 2022. वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है. अर्थ डे 22 अप्रैल को. इन्वायरमेंट डे 5 जून को. योगा डे आई थिंक 21 जून को. योगा डे में कंफ्यूज हूँ, बट जून में ही मनाया जाता है, इतना कंफर्म हूँ. तो ये डे कब कब होते हैं ये जरूर याद कर लो, खासकर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. What is the name of the deepest known point in the Earth ocean? Challenger Deep, located in the Mariana Trench. ठीक है? This is the deepest known point in the Earth ocean.